हेलो बच्चों, तो टुडे वी विल सी सेक्शन सी। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 26A। कंसीडर द टेबल बुक एंड मेंबर गिवन बिलो। ये हमारा बुक टेबल है जिसमें 3 कॉलम और ये मेंबर टेबल है जिसमें 4 कॉलम। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक नेचुरल जॉइन मेंबर। नेचुरल जॉइन में क्या होता है, दोनों टेबल का जो कॉमन नेम होता है, जैसे कोड यहाँ कॉमन नेम है, उसका जो बस कॉमन वैल्यू है उसका ही बस लिस्ट होता है। ज्वाइन में क्या होता है, इट मेक्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। और नेचुरल ज्वाइन में होता है आउट ऑफ दोज पॉसिबल कॉम्बिनेशन ओनली दैट विच प्रेजेंट इन बोथ टेबल, वही आपका डिस्प्ले होगा। जैसे L102, तो L102 का ये वाला रो, then this row. Again for F01 I will just show the output in the, I have already created both the table, so you get only those 3 which are common in both table, और कोड वाला कॉलम हमारा रिपीट नहीं होगा। तो यही हमारा आउटपुट हुआ। फर्स्ट दिस टेबल, बुक के टेबल का रो, देन मेंबर के रो, and only those value which are common in both the table. Now next is write the output of the queries 1 to 4 based on the table employee. ये हमारा employee table है जिसमें ये सारे columns हैं। तो क्या हमें करना है, select name project from employee order by name DSC। इसमें क्या है, नेम कॉलम आएगा, प्रोजेक्ट कॉलम आएगा। ओनली दीज टू कॉलम्स विल डिस्प्ले। और कैसे डिस्प्ले होगा, नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये सारे जो नेम है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये भी टेबल मैंने क्रिएट कर रखा है। विल सी द आउटपुट से। So the name came in descending order and only name and project will be in the output. Question number 2 क्या है, select name salary, only now these 2 columns name and salary from employee। क्या है भाई, where name like a percentage। ये क्या होता है आपका वाइल्ड कैरेक्टर कहलाता है, मतलब ऐसा नाम जो ए से शुरू हो। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ। इस परसेंट का मतलब होता है 0 occurrence or any number of occurrence of any character. So basically it's trying to say display those names whose starts with letter A, और बस नेम और सैलरी डिस्प्ले करानी, अदर कॉलम्स नहीं। I don't know why the space got omitted. Salary from employee where name like, now there should be no error. Yes, so only those name which starts with A and only name and salary column is displayed. We'll see the next question. Select name and DOJ, date of joining, from employee where salary between 10 1 lakh and 2 lakh। तो ऐसा बस कॉलम जिस, ऐसा ही रिकॉर्ड जिसका सैलरी 1 लाख से 2 लाख के बीच में है और उसका नेम और DOG बस डिस्प्ले करें। तो विल डू। तो रंजन, अख्तर, मुनीरा, ओनली दोज 3 आर देयर। विल सी। रंजन 1.5 lakh salary, Akhtar 1,25,000, Munira 1,35,000. So only these 3 rows will be displayed and only name and DOG column, not all the columns. Now select a star from employee where project is P01। तो जो प्रोजेक्ट हमारा P01 है तो ओनली 2 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिसको इसमें स्टार है यहाँ पर, तो यू हैव टू डिस्प्ले ऑल द कॉलम्स। So this is the output, only P01 प्रोजेक्ट का रो डिस्प्ले करना।
Now we'll move to the next question, 27A. Consider the following tables, faculty and courses. Faculty हमारा ये table है, courses का ये table है. Now what will be the output of the following statement? Select FID, min fees, max fees from courses group by FID. तो FID को group करके max और min fees निकालना कोर्स टेबल से. तो कोर्स टेबल में FID F01 F01 दो ऐसा है, तो ग्रुप बाई में मैक्स हो जाएगा आपका 40,000, मिन हो जाएगा आपका 12,000. वैसे ही F04 दो है, इसमें भी आपका 15,000 मिन होगा, 17,000 मैक्स होगा. F03 एक ही रिकॉर्ड है ऐसा, तो इसका मिन भी 8,000 होगा, मैक्स भी 8,000 होगा. F01 हमने कर लिया. F05 में भी एक ही है, इसमें नल है तो मिन भी नल आएगा और मैक्स भी नल आएगा. तो विल सी F01 12,000 इज द मिन, 40,000 मैक्स, 15 और देखिए एक ही रिकॉर्ड था तो 8,000 मिन भी है, 8,000 मैक्स भी है, और जहाँ नल था मिन भी नल है, मैक्स भी नल है. विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. Select average salary from faculty where F name like percentage A. मतलब ऐसा जो नाम जो A से एंड होता है उन सारे रिकॉर्ड्स का एवरेज सैलरी निकालना. तो A से कौन, बस नेहा और अनिश्मा, ये दो रिकॉर्ड हमारा A से एंड हो रहा है. इसका एवरेज सैलरी 32,000 प्लस 27,000 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आएगा. आउटपुट will see. So उसका होता है 29,500. Now next number 3. Select F name, C name from faculty F, courses C, where F dot FID equal to C dot FID and courses dot FID equal to F04. ये ज्वाइन है आपका, दोनों टेबल का ज्वाइन होगा. और ये ज्वाइन का जब नेचुरल ज्वाइन हम यूज़ नहीं करते तो ये कंडीशन देते हैं. तो वैसे ही रिकॉर्ड को कंसीडर करना है जहाँ पे FID की वैल्यू सेम होगी, और दूसरा क्या है, FID की वैल्यू F04 होनी चाहिए. तो FID की वैल्यू F04 यहाँ पाइथन में है, और दूसरा यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क में. और क्या हमें डिस्प्ले करना है, F नेम एंड C नेम. तो F नेम क्या हुआ, नेहा ने लिया F04, तो F नेम हुआ नेहा और C नेम हुआ पाइथन. नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा F नेम हुआ नेहा और C नेम हुआ कंप्यूटर नेटवर्क. सो दिस विल बी द आउटपुट. हियर इज, आई हैव ऑलरेडी रन इट. सो दिस इज द आउटपुट. F नेम, C नेम, नेहा पाइथन, नेहा कंप्यूटर नेटवर्क. Now next question is select F name, C name, fees from faculty F, courses C, where F dot FID equal to C dot FID and fees greater than 15,000. So again the similar kind of question, natural join का clause है यहाँ पे, और वैसा वैल्यू रिकॉर्ड जिसकी 15,000 से ज़्यादा फ़ी है. तो हमारा 1 3 4 5, only these records are there, so we need to check all the fees. 15,000 से ज़्यादा आपका ग्रिड कंप्यूटिंग हुआ, पाइथन हुआ, ये 15,000 से ज़्यादा नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो बस ग्रिड कंप्यूटिंग और पाइथन. F01 और F04 किसने लिया, अनिश्मा ने लिया. अनिश्मा ग्रिड कंप्यूटिंग, एंड F04 नेहा ने लिया, तो नेहा पाइथन. ये दो रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले होगा. Quickly execute this for the output. Why we got error, you see. Here the column name is fees, but in question it is written fee. So we can consider it is a typo error, and will write our output according to. So this is the output we'll get. And similar type of typo is there in this as well. The question number 3.
you might have noticed, like it didn't execute for the first time. Courses.fid, when I type, it says courses.fid is not. When I change courses to c.fid, then we get the correct output. So these two you can consider as a typo error. We believe that in board questions such typos won't be there, but even if it is there, you just write whatever the correct output will be. What is the correct output? You don't point out what are the mistakes and all. So yeah, we'll move question number B. Write the name of the command to display the structure of a table in a database. So we have a command dsc or describe. If we'll just run on the same table, any faculty, so dsc faculty, or we can write describe faculty, both will give the same output. So for the answer for this will be dsc or describe. Write a function count in Python to read from the text file gratitude.txt and display the count of the letter E in each line. देखिए हमारे एक फाइल है, हमें एक फंक्शन लिखना है काउंट, जो कि ईच लाइन में हाउ मेनी ईज आर देयर इट विल काउंट दैट. So we'll write that. So how we define a function? Def, then function name, a colon, so what we have to do, we have to read the file. So we'll open that file first. F equal to open gratitude.txt. So if we don't give any mode, then by default it will read in read mode. Then next we'll read the lines using F read lines command. Next what we'll do, in each line we need to count, and also we have to keep track of line number. So for line in lines, now we iterating each line. Then we have a function called count, and we have to count the number of letter E. The output should be line 1 colon and the count of letter E in each line. So in print line, कौन सा लाइन चल रहा है उसके लिए plus, then we'll convert this integer as well to string. और जैसे ही हम ईच लाइन इटरेट करेंगे तो इसका काउंट भी एक बढ़ा देंगे, सो दैट जैसे फर्स्ट बार एंटर किया तो विल डू काउंट +1, देन इट इज़ लाइन नंबर 1. देन नेक्स्ट टाइम एंटर किया तो 1 इसकी वैल्यू 1 में 1 ऐड होगी 2, तो ये हम लाइन काउंट के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं.
We are done with the operations. We have shown the number of the. We have to close the file. It's a good practice. Then we need to call the function. That's all. Run module. That is our expected output. Now next 28 का और part देखें. Write a function starts with I in Python which should read a text gratitude.txt then displays line starting with I. Similar type है. इन पिछले वाले में आपको each line में E का count करना था. यहाँ पे वैसे लाइन को डिस्प्ले करना है which starts with I. तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से only these two line starts with I. तो इस दो लाइन को प्रिंट करना. We'll write the function. Function हम write करते हैं def function name. Then हमें read करना है. तो उसके लिए फाइल खोलनी होगी. gratitude.txt. हम कोई मोड नहीं पास करते तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में फाइल खुलता है. अब सारे लाइंस को रीड करने के लिए हम f.read लाइंस करेंगे. देन लूप फॉर ईच लाइन के लिए. इफ हमारे स्ट्रिंग में एक फंक्शन होता है starts with starts with, not only start with, capital I, then print that line. Call that function. We execute the code. .txt file is not good. ये अब करेक्ट हुआ अपना. So that is the expected output. हमारे gratitude फाइल सही से नहीं लिखा हुआ था. इस according to that file the output came correct, but with the correct file, or rather say with the file which is shown in example here, we'll get the output these two lines. Or one thing, file operations में once we are done with that we need to close the file. That won't affect our output, just it's a good practice to close it. So it's the same. So next हमारा question है question number 29. Navdeep creates a table result with a set of records to maintain the marks secured by the students in SEM 1, SEM 2, SEM 3 and their division. After the creation of the table, he entered 7 students in the table. हमारी table दी हुई है. Based on the data given above, answer the following question. Identify the columns which can be considered as a candidate key. Candidate key वो होती है ऐसे कॉलम जिसकी वैल्यू यूनिक हो. तो एडमिशन AD नंबर इज द एडमिशन नंबर. ये एवरी स्टूडेंट का यूनिक होगा. सो दिस कैन क्वालिफाई कंसिडर एज अ कैंडिडेट की. सिमिलर रोल नंबर, this will be also unique for each student, so roll number will also be considered as candidate key. S name, no, S name दो स्टूडेंट्स का नेम सेम हो सकता है. सेम 1 में जो मार्क्स आए वो भी कैन बी सेम. सेम 2 similar, division also. So only AD number and roll number is the can be considered as candidate key. Now if 2 more columns are added and 3 rows are deleted from the table result, what will be the new degree and cardinality of the above table? डिग्री क्या होता है? आपका नंबर ऑफ कॉलम्स होता है और कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज होता है. तो अगर हम 3
2 मोर कॉलम ऐड कर दे तो 1 2 3 4 5 6, अभी 6 है, 6 में तो और ऐड कर दिया तो 8, तो न्यू टेबल की डिग्री 8 हो गई। और रो अगर हम 3 डिलीट कर रहे हैं तो रेस्ट हमारा 4 बचेगा, तो कार्डिनलिटी 4 हो जाएगी। तो क्वेश्चन 2 का आंसर हुआ डिग्री 8, कार्डिनलिटी 4। राइट स्टेटमेंट टू इंक्रीज द सेम 2 मार्क्स बाई 3% ऑफ द स्टूडेंट सिक्योरिंग मार्क्स बिटवीन 70 to 100। तो हमें क्या करना है, वैसे सारे स्टूडेंट्स का जिनका मार्क्स 70 to 100 के बीच में है उनका 3% हमें मार्क्स इंक्रीज कर देना है सेम 2 का। तो विल राइट अ कोड फॉर इट। What is the table over here? The result. So we have to write the query update table name set, हमें सेम 2 की वैल्यू 3% इंक्रीज करनी है। सेम 2 इक्वल टू सेम 2 प्लस 0.03 इंटू सेम 2 कब करनी है, वेयर सेम 2 की वैल्यू बिटवीन 70 एंड 100। तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। दिस इज़ द क्वेरी। आई विल सी द आउटपुट। सी सेम 2 की वैल्यू ओनली 1 रिकॉर्ड था जो कि 70 से 100 के बीच में था, तो वो अपडेट होके 77 हो गए। So that is the output, that is the query for the question number 3. Now we'll move question number 30. Given a dictionary STU dict, डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट डिक्शनरी, शॉर्ट में STU dict है, containing marks of the student of 3 test series in the form of STUID, TS1, TS2, TS3। तो ये जो आपका STU डिक्शनरी है इसमें रिकॉर्ड्स है जिसमें कि की आपकी STUID है, उसमें 3 मार्क्स हैं, TS1, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 के मार्क्स हैं एज अ की वैल्यू पेयर। Write a Python program with the following user-defined function to perform the specified operation on a stack named STU/STK। तो हमें एक STU/STK स्टैक पे सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। पहला क्या है, पुश एलिमेंट। ये फंक्शन लिखना है जिसका आर्ग्यूमेंट STU/STK दैट इज़ द स्टैक, स्टूडेंट डिक्शनरी है। It allows pushing IDs of those students from the dictionary into the stack who have scored more than equal to 80 marks in the TS3। तो आपके TS3 की वैल्यू अगर 80 से ज़्यादा है और बराबर इक्वल टू और ग्रेटर दैन, तो वैसे स्टूडेंट की आईडी हमें स्टैक पे पुश करनी है। तो we'll write this function। तो फंक्शन डेफिनेशन कैसे होगा, df फंक्शन नेम। अब हमें क्या है, ये स्टूडेंट डिक्शनरी को ट्रैवर्स करना है। तो फॉर की इन डिक्शनरी, अब की से जो हम वैल्यू एक्सेस करेंगे वो हमें देगा these 3 values as a tuple। here you see 87, 68, 89। तो इसका हमें टेस्ट 3 का वैल्यू एक्सेस करना, तो टपल का कौन सा इंडेक्स पे होगा, 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स को हमें एक्सेस करना। इफ इससे हमारा टपल आया, टपल का सेकेंड इंडेक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है
तो वैसे स्टूडेंट को इस स्टैक पे पुश ऐड करना है। तो लिस्ट में हमारा एक अपेंड फंक्शन होता है, उसमें हम उस स्टूडेंट आईडी जो कि हमारा की है यहाँ पे, उसको ऐड कर देना। That's all. Now we'll define this. And call the function. हमें स्टैक भी डिफाइन करना होगा। इसको हम empty list दे दिए। Now we'll execute it. So हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। If we want to see the output, we'll just print over here run module. That is our stack with these student ID. That is the expected output after executing push element. STK ID should contain 15, 12, 14, 18. 5, 12, 14, 18, not 15, 5, 12, 14, 18. So that is done. What is the question 2, part 2 of it? Pop element STQ STK. It removes all the element present inside the stack in leaf order and prints them. Also the function displays stack empty when there are no element in the stack. तो हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट को लीफ वाला लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में उसको पहले रिमूव करना है, और जब स्टैक खाली हो जाए तो स्टैक एम्प्टी लिखकर हमें डिस्प्ले कराना। We'll write in the same. So फंक्शन के लिए def pop हमें क्या करना है, एलिमेंट रिमूव करना है। उसके लिए हम स्टैक का लेंथ ले लें। Now for I in range, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से उतनी ही हम लूप रन करेंगे। और हमारे लिस्ट में एक फंक्शन होता है पॉप, जो कि आपका लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है लिस्ट से और उसको रिटर्न भी करता है। तो प्रिंट स्टेटमेंट विल प्रिंट दैट। नाउ जब हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा, then we'll check if len of equal to 0, that means stack empty. ये वन वे ऑफ राइटिंग है, आप अदर लॉजिक भी लिख सकते हैं, बट एक्सपेक्टेशन जो है वही होनी चाहिए। जैसे लूप को रन करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, स्टैक एम्प्टी चेक करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। नाउ विल कॉल दिस फंक्शन। दैट्स ऑल। ये दोनों फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा। सेम फाइल में ही मैंने लिख रखा है इसलिए। सो
पहले इसने प्रिंट किया कि दीज एलिमेंट पुश्ड इनटू द स्टैक, तब एक एक करके देखिए लास्ट में जो किया एक एक करके रिमूव किया, अंत में स्टैक खाली होने पे स्टैक एम्प्टी प्रिंट हो गया. That is our expected output. After executing pop element, the output should be 18, 14, 12, 5, stack empty. So this concludes our section C.